A very pleasant morning to all of you who are watching and listening to this video. Today, I am going to teach you a poem of 12th class, an elementary school classroom in a slum, composed by Stephen Spender. Sir Stephen Harold Spender was an English poet, novelist, and essayist. Left University College, Oxford, without taking a degree. He took keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. He was appointed as poet laureate consultant in poetry to the United States Library of Congress in 1965, though he was a Britisher. He was knighted in 1983. Now, the theme of the poem. We always find two worlds in the society, that is, the world of the poor and the world of the rich. This difference, this gap, this inequality is the central theme of the poem. An elementary school classroom in a slum. The poet puts forward the miserable condition of the children of the slum area and requests the powerful people to embrace this gap. That's why, though the poem deals with the dark side of the underprivileged children, doesn't create the atmosphere of pessimism. So, let us start our poem. Far, far from gusty waves, far यानी बहुत दूर from gusty waves. Gusty कहते हैं strongly blowing waves. These children's faces, इन बच्चों के चेहरे. Simply और surfacely अगर हम देखें तो पोएट सिर्फ इतना कहता है कि this school building is built in a slum area which is far away from the strong winds of the sea. So there is no scenic beauty. But the underlying message that he wants to convey is these gusty waves is used as a metaphor and refers to the lively and energetic aspect of a child's life which is lacking in the faces of these children. इन बच्चों के चेहरे पर वो एनर्जी नहीं है. उनके चेहरे हैं, वो अपनी स्टोरी जो है वो खुद ही सुना रहे हैं. Like rootless weed. Rootless means not belonging और weeds means unwanted plants. इनके चेहरे जो हैं वो रूटलेस वीड्स की तरह हैं. देखिए कितना सुंदर सिमिली उसने दिया है. As weeds are unwanted, nobody likes weeds in the garden. So these children are also unwanted in the society. So, number one, the poet says that the school is situated in a slum area which is very far from the scenic beauty of nature. The faces of children have lost all the energy and they look like rootless weeds and are unwanted in the society. The hair torn. Hair torn means hair is not combed round their pallor. Pallor means pale. The hair that are around their pale faces is uncombed. The tall girl with a weighed down head. There is a tall girl, एक लंबी सी लड़की है with a weighed down head. उसने अपना सर नीचे करा हुआ है और ऐसा लग रहा है as if the burden of all the world is sitting on her shoulders. It means that she is ill and exhausted. She is depressed. She is ashamed. And that is why she has bowed her head. The paper seeming boy. Paper seeming boy. यानी कि वो जो लड़का है वो इतना कमज़ोर है बिल्कुल पेपर की तरह. जस्ट लाइक द शीट ऑफ ए पेपर. एंड इट इज़ ए वेरी ब्यूटिफुल
use of metaphor. With rat's eyes means the greed that is reflected in his eyes. उसकी आंखों में एक लालच दिख रहा है, एक भूख दिख रही है, चूहे की तरह. द स्टंटेड मीन्स चेक्ड ग्रोथ, उसका विकास रुक गया है. अनलकी, वो अभागा हेयर, उत्तराधिकारी है ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियों का. यानी कि वो जो बच्चा है वो अंडर डेवलप्ड है और उसने अपने फादर से इनहेरिटेड डिसेबिलिटी ग्रहण की है. he is having an inherited disability. Reciting a father's gnarled disease, gnarled कहते हैं गांठेदार, खुरदरा. डिसीज माने बीमारी, अपने पिता से उसने वो बीमारी ली है. हिज लेसन, वो अपना पाठ पढ़ रहा है फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पर बैठ के. एक्चुअली द पोएट वॉन्ट्स टू सजेस्ट दैट इवन द चाइल्ड इज हैंडीकैप्ड, द चाइल्ड इज डिसेबल्ड, ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग इन द वर्ल्ड. हालांकि सिचुएशंस बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हैं, उसके फेवर में नहीं हैं, स्कूल बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर उसको नहीं मिल रहा है, और फिर भी वो आगे जाना चाहता है, इसीलिए वो वहाँ बैठ के पढ़ रहा है. एट बैक ऑफ द डिम क्लास, उस डिम अंधेरे क्लास के पीछे, वन अननोटेड, एक बिना ध्यान दिया हुआ स्वीट एंड यंग बच्चा बैठा है. हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आँखें सपनों में जीती हैं. ऑफ स्क्वेरल्स गेम, वो गिलहरी का खेल देख रहा है. इन ट्री रूम मीन्स कोटर, जो पेड़ में एक हॉलो क्रिएट होता है उसमें. अदर देन दिस, वो इन सब से अलग है और अपनी निगाह उसने क्लास के बाहर लगा रखी है. ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द क्लास बिकॉज द क्लास इज़ नॉट एट ऑल अट्रैक्टिंग हिम. दैट इज़ वाई ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टू द लेसन्स. मोर ओवर, this child is different from the others. He has hopes for a bright future. In the boy's imagination, that tree room, the hollow in a tree, is full of fun, curiosity and mystery. This is in contrast to the gloomy classroom. So the very first stanza of the poem clearly presents that the children who read in this school do not belong to the high class society. Their faces tell the story of their misery.